is to, bring you Heart to Heart with Saima every Thursday from 1 to 3. Share my journey with you, my journey, my life, whatever it is that जो मेरी खुद की जस्तजू है, जो मेरी खुद का सफ़र है. बहुत सारी चीज़ें हैं in life. There are mistakes. Mistakes for me has a very different explanation, a very different way I look at the word mistakes. I think life is just a series of life is a series of experiences, and in this series of experiences, there are some experiences which give us the result that we are hoping for. There are some experiences of life which give us joy. There are some which break our heart. There are some where we don't realize, but there are bad choices, bad decisions on our part. And sometimes we don't even realize, but we hold the other person accountable, we blame others. But ho sakta hai ki wo galti hamari khud ki ho. So if you're joining me right now, this is Heart to Heart with Saima. I come to you every Thursday from 1 to 3. I'm so humbled. I'm so grateful to everyone who comes and who joins and who listens, who resonates with my journey, because मेरा जो ये ज़िंदगी का सफ़र है, जो भी मुझे इस वक्त सुन रहा है, मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं अपनी सोच आपके ऊपर ला दूं, और ना मेरी ये सोच है कि मैं किसी दूसरे को जज करूं, ना मैं ये चाह रही हूं कि आप मेरी हर बात से इत्तेफाक करें. मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर मैं यहाँ पर डेफिनेटली आके अपनी जर्नी, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपना ज़िंदगी का सफ़र सबके साथ शेयर करती हूँ. और इस प्रोसेस के अंदर मैंने ये भी रियलाइज़ करती हूँ कि लाइफ जो है वो लाइफ इज सो मच परसेप्शन, लाइफ इज जस्ट सो मच इंटरप्रिटेशन. जो जो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़मीर की सुनती हूँ. आई लिसन टू माई कॉन्शियंस. अगर मेरा कॉन्शियस मुझे बोलता है कि तुमने कुछ गलत किया, या तुमने किसी का दिल दुखाया, या तुमने कुछ गलत कर दिया जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंची है, तो फिर मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ. और फिर जब तक मैं उस चीज़ को फिक्स नहीं कर लेती, फिक्स करना भी सिर्फ इतना कि मुझे अगर किसी को सॉरी बोलना हो तो मैं मैं रिलक्टेंट नहीं होती, मैं हेजिटेट नहीं करती, मैं अपने ईगो को आने नहीं देती, मैं अपने ईगो को ओवरराइड करती हूँ. और अगर मेरा कॉन्शियस मुझे बॉदर कर रहा होता है कि शायद मेरे से कोई गलती हुई है, तो मैं जाके उसको फिक्स करने की कोशिश करती हूँ. आई विल अपोलोजाइज फॉर something when I hurt someone. Sometimes it's the circumstances. Sometimes it's what we might be going through. If you have been listening to me for a while, I always tell you that 2021 and beginning of 2022, these were the most difficult. 2021 was probably the most difficult year of my life. इसमें बहुत सारी पर्सनल एलिमेंट्स थे, पर्सनल चीज़ें थी. I feel that I was going through a storm, and I was teaching myself to learn how to stay afloat of the water. And afloat रहने के साथ साथ I was learning how to ride the waves. But तो ये जो सफ़र के अंदर the learning and educating and figuring things out and inspirational stuff, तो ये चीज़ें मैं आपके पास लेके आती हूँ, and I share these things with you. I don't usually play a whole lot of music in my 2 hours on Thursdays from 1 to 3 because music is there, but my intention is कि if I can lift someone up, if someone is having a downer day, अगर किसी की चेहरे की मुस्कुराहट छिन गई है, या किसी को किसी चीज़ की फिक्र खा रही है, बट अगर आप एकदम से आप अपना रेडियो लगाते हैं और आप मेरी बातों को सुनते हैं,
और अगर मैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट को वापस लाने में कामयाब हो जाऊं, या अगर मैं आपके अंदर ये फीलिंग पैदा कर सकूं कि यू नो व्हाट डूड, इट्स गोना बी ओके, यू नो दिस इज लाइफ, लाइफ में ऊंच नीच, अच्छाई बुराई, लाइफ आपको हर तरीके से, हर तरह से लाइफ आपको चैलेंज करती है, और but you know what, I'm going to turn into this person who is like a bystander, और bystander में मैं अपने आप को अपनी अपनी बॉडी के अंदर से निकाल के, and I'm going to place myself outside and I'm going to stand there and I'm going to just let you know, ये दरिया बह रहा है, और दरिया में जब बह रहे हैं तो वहाँ पे पत्थर भी आते हैं और अलग अलग रास्ते भी आते हैं, मगर जब आप उस पानी के बहाव जो बहाव है, अगर आप उसके साथ फाइट करने की कोशिश करने के बजाय, if you just let loose and you start just going with the flow and you just start flowing, then your journey changes. और अगर आपकी आपकी थोड़ी सी भी फिक्र या थोड़ी सी भी अगर डिमीनर आपका जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर अगर मैं कुछ चेंज लेके आ सकूं, तो दैट इज़ माय पर्पस ऑफ बीइंग हियर, एंड दैट इज़ हार्ट टू हार्ट with Saima. So with that, I am going to play this song for you, and I hope you enjoy it. And it's an old song, but this is a remix version, and it is Tip Tip from Suryavanshi. Okay, so रेडियो पे इस वक्त वी हैव प्लेड अ सॉन्ग, एंड वो गाना जब गाना ख़त्म होगा तो वी विल गेट इनटू more depth of our show. So, people who are watching me right here, if you're watching me on StreamYard, LinkedIn, YouTube, or my personal Saima Malik Dillon ke page ke upar, I would love for you guys to hop over to Saima Dillon, the official business page, and watch me there, because वहाँ पे मुझे आपकी comments वगैरह सब नज़र आ रही होती हैं, वहाँ पर you can even join me on the show. कुछ change लेके आ रही हूँ, पहले मैं Facebook के ऊपर direct कर रही होती थी, but I'm shifting things over to the business page, because the business page gives me an opportunity to do a lot more, and it gives me an opportunity for more people to watch, for more people to follow, versus my personal page जिधर आप लोग continuously join करने की request भेज रहे होते हैं, and you're sending me a friend request, और वो personal page के ऊपर उसको manage करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो that's why I'm shifting everything uh, over to the business page. So I would love for you to follow from that page. And how is everyone doing? I'm always excited on Thursday. You know, heart to heart is basically, you know, from heart. So इसलिए it gives me a lot of pleasure to come here. Uh, uh, okay, so the person on Facebook says my question was different. Um, so I think your question was, okay, Starbucks will only sell to politicians, and I did answer saying that that is not true, because my client is not a politician; he is a physician. So all right, so that was Tip Tip. I hope you all enjoyed it. So मैं definitely कोशिश करती हूँ कि मैं background के अंदर at least थोड़े बहुत आपके गाने मैं आपके लिए बजा सकूँ in the background. So having said that, we now go into um, the show, and we talk about. Let's see. We talk about. Uh, let's begin. So
We're going to start by sharing something. We're going to. This show is of today is based on Wayne Dyer, Dr. Wayne Dyer, and it is based on the fact that um, it's based on the fact that there are so many things in the world. There are so many teachings in the world, and um, जो चीज़ें क्या कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इम्पैक्ट करती हैं एंड हम किस चीज़ को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं राइट दैट that makes a huge difference. So there's a story, and the story uh, is basically it's a story of four philanthropists, and the philanthropists, these four philanthropists, they live in this village. So these people live in this village, and so their village is invaded by some other people. So when the warriors come and they invade the village, and they place pretty much, most of the people in camps, and they hold them hostage as prisoners. तो बहुत सारे जो विलेजर्स थे, जो उन लोगों को जानते थे, जो उनके जो आर्मी में थे एंड जो इम्प्रिजन हो गए लोग. um, तो द फर्स्ट जो फिलान्थ्रोपिस्ट था, द फर्स्ट फिलान्थ्रोपिस्ट केम, एंड उसके पास बहुत पैसा था. So he came and he went to the people जिन्होंने सारी ये पूरी आर्मी को के लोगों को imprison कर लिया था, and they said to them, to the person who was in charge, they said that I understand कि ये जो लोग हैं who have been imprisoned, they are not, they don't have fresh water, they only have cold water. They don't, they are not living, being, they are not able to drink the best of water. So I want to purify the water for them, and I want to donate all my savings and all my wealth to the water, so that ये जो मेरे compatriots हैं, ये जो imprisoned हुए हुए हैं, they can get good water and they don't get sick. So his wish was granted, and they used his wealth towards purifying the water. So the second philanthropist came, and the second philanthropist realized कि उसके जितने, ये जो आर्मी के जितने उसके शहर के जो लोग हैं जो इम्प्रिजन हो गए हैं, वो सब पत्थरों के ऊपर सो रहे हैं रात को, और रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और उनके पास कोई चादर नहीं है, कोई ब्लैंकेट नहीं है, उनको कवर करने के लिए कोई चीज़ नहीं है. सो व्हाट ही wanted to do was he wanted to donate his wealth and his money for that purpose, so that वो अपनी डेस्टिनी को फुलफिल कर सके, और वो उन लोगों को प्रोवाइड कर सके. उसने अपना पैसा डोनेट कर दिया, सो ही कुड प्रोवाइड देम विद ब्लैंकेट्स एंड विद ईज ऑफ being imprisoned while they were in the prison. Now the third philanthropist came, and third philanthropist ने डिस्कवर किया कि वो जो खाना खा रहे थे, the खाना was not good enough, the खाना was just beans, it was not nutritious, it wasn't keeping the prisoners in good condition. So the third philanthropist, what he did was, the third philanthropist donated his wealth towards better food for these people, so that they could, उसके पास farms थे जिधर खाना grow होता था. तो उसने कहा कि I'm going to donate all the food from my farms, ताकि the people who have been imprisoned, they can live a much better, uh, while they're in the prison. So uski wish bhi grant ho gayi, and they started living, eating much better food. Now जो fourth philanthropist था, वो जो था वो एक सेंट था, वो एक बहुत पहुंचा हुआ इंसान था. तो वो जो फोर्थ philanthropist था, he was not like an ordinary human being. वो एक इंसान की जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल होता है, जो हमारे अंदर का, जो हमारी रूह किस लेवल के ऊपर ऑपरेट करती है, वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, वो एक बहुत हाई कॉन्शियसनेस की लेवल के ऊपर रहता था. तो वो गया और उसने ये फाइंड आउट किया
कि जो प्रिजन है, जिधर सब लोगों को प्रिजनर के तौर के ऊपर रखा हुआ था, कि ये लोग उस प्रिजन की चाबी किधर रखी जाती है। एंड तो ये जो मेटाफोरिकल स्टोरी है, बेसिकली इसका 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 एक पर्पस है, और वो ये है कि जो वो फोर्थ फिलैंथ्रोपिस्ट था, ही वेंट एंड उसने दरवाजे खोल दिए वो चाबी लेके, एंड ही फ्रीड ऑल द प्रिजनर्स सो दैट all the prisoners could leave that place. So हम majority of the human race, जो हम इंसान हैं, हम एक ordinary level के ऊपर रहते हैं, but हम में से कुछ ऐसे वो लोग हैं जो एक हायर कॉन्शियसनेस की लेवल के ऊपर रहते हैं, उनका एम्पैथी ज़्यादा होता है, वो दूसरों की सफरिंग को डिफरेंट तरीके से व्यू करते हैं, उनका लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत मुख्तलिफ होता है, और वो दुनिया को एक डिफरेंट लेवल के ऊपर देखते हैं। सो व्हेन ही उसको उसकी फीलिंग्स जो थी, his feelings were very different, and he wanted to release everyone. He wanted to do something which would just change that whole prison, and where everyone could be freed. तो इंसान जब आप अपने अंदर की एक जंग हमारे साथ चल रही होती है, वो एक जंग है जिसके अंदर आप हर वक्त अपने आप को चैलेंज कर रहे होते हैं, आप अपने आप के साथ आपकी एक जर्नी चल रही होती है, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड ये वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है विच इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस लेवल। ये वो चीज़ है कि आप इस पर्पस के साथ, शायद आप परहैप्स यू आर बॉर्न विद इट, ये वो पर्पस है जो शायद आपकी तकदीर है, आपकी डेस्टिनी है, वेयर यू आर कमिंग इन एंड यू आर होपिंग टू चेंज लाइव्स। जब आप अपने अंदर आप पर सर्च करना शुरू कर देते हैं, एंड यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, डूइंग अ लॉट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, एंड यू स्टार्ट वांटिंग टू not go out there and कि आपने खाना बदल दिया, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये सब दे आर अमेजिंग थिंग्स, बट व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू वर्क ऑन चेंजिंग योर ओन सेल्फ फ्रॉम विद इन यू, इट जस्ट चेंजेस, स्टार्ट्स चेंजिंग, आपकी एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाती है, आप हर चीज़ को देखने का नज़रिया आपका बदलना शुरू हो जाता है। आप बजाय इसके कि आप हर वक्त सोचें कि you know what, I'm in an argument with someone, I'm going to be right, I'm going to keep arguing, I'm going to keep fighting, because you know it's connected to your ego. The ego always wants to be right? आपका जो, from switching over from your ego into a state of higher consciousness, into a state where आपकी empathy का level बढ़ जाता है, a state जिधर आप ये feel कर सकते हैं कि दूसरों का क्या दर्द है, दूसरों की क्या तकलीफ है। और देखिए, हर इंसान का मकसद, हर इंसान का पर्पस इस दुनिया में ना मुख्तलिफ है। Everyone is not in this world for the same purpose, for the same reason. So we all have a different purpose. मैं आपके पास इधर आती हूँ, I come to you here, you know, every Thursday from 1 to 3, और मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं जैसे जैसे खुद के ऊपर वर्क कर रही हूँ, मैं जो चीज़ खुद लर्न कर रही हूँ, वो मैं यहाँ पर आके और आपके साथ शेयर कर सकूँ। And while I work on making myself a better human being, so for me, no matter what, humanity comes first. मेरे नज़दीक, और ये बात मैं बहुत सालों से बोलती आ रही हूँ, मेरी लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं इस चीज़ के ऊपर, जब मैं बोलती हूँ कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट एंड पीपल से रिलीजन कम्स फर्स्ट। एंड आई फील कि अगर आप इंसान अच्छे नहीं होंगे, तो उसके बाद आपका मज़हब, चाहे वो जो भी मज़हब आपका हो, आप अपने मज़हब में कैसे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं अगर आप में अगर इंसानियत ही नहीं है। बिकॉज ये जो कायनात है, ये जो दुनिया है, ये दुनिया जो है, ये उसका क्रिएटर तो एक ही है। So now it's up to you, whatever you want to, whatever your beliefs are, based on your belief system, whatever you want to call your creator. But the creator of this whole world is the same.
जिसने हर इंसान को बनाया है, जिसने हर परिंदे को बनाया है, जिसने हर हर चीज़ जो एक एक पत्ता जो मूव करता है, जो हर चीज़ आसमान से लेके ज़मीन तक, जिस क्रिएटर ने ये सारी चीज़ों को क्रिएट किया है, इट इज़ द सेम क्रिएटर फॉर एवरीवन। ये तो नहीं है कि क्रिश्चियंस को किसी डिफरेंट क्रिएटर ने बनाया है, तो मुस्लिम्स को किसी और क्रिएटर ने बनाया है। द क्रिएटर ऑफ द होल कायनात, द होल यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड इज द सेम। सो व्हाई नॉट फोकस ऑन बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग? दूसरे इंसान के लिए आसानियां पैदा करें, बजाय इसके कि पहले आप ये पूछें कि भाई तुम्हारा मजहब बताओ, तुम्हारा मजहब क्या है, और अगर उसका मजहब आपके मजहब से कन्फर करता है तो आप जाके उसके लिए एक अच्छे इंसान बने। I came to the US in 1992 as a student, and मैं हाई स्कूल ख़त्म करके आई थी पाकिस्तान में। और मैं जब यहाँ पर जब आई तो मेरे साथ इतने ऐसे किस्से हुए, जिधर I met with these amazing American people, um, Joe, who went above and beyond. They went out of their way from a humanitarian perspective, and they bent over backwards. I lost my purse some places. They found it. They met me middle of the night. They gave it to me. I mean, just amazing kind of people who did for me whatever they did simply because they were all about humanity. For them, that kindness, जो अच्छाई है वो इनहेरेंट है। उस अच्छाई का ताल्लुक नहीं है कि किसी का रंग क्या है, व्हाट्स द कलर ऑफ समवन स्किन, या किसी का बिलीफ सिस्टम क्या है, या किसी का मजहब क्या है। अगर आप इंसान अच्छे नहीं होंगे तो आप अपने खुदा के करीब कैसे हो सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। स्टूडियो का नंबर इज 214-817-3333. In a minute and a half, we are going to go on a break. And when we come back, we're going to resume our conversation. You are listening to Heart with Saima. I come to you every Thursday from 1 to 3. You're listening to Radio Caravan 104.1 FM, 700 AM. Join the caravan.com पे आप जा सकते हैं, and people listen to us from all over the world. आप अगर आप YouTube के ऊपर जाएंगे, you're going to find Saima Dillon, Heart to Heart with Saima. मुझे 2.5 साल हो गए हैं कि मेरे सफ़र के अंदर, इस सफ़र के अंदर har hafte I would have a guest who would come in, and I would spend an hour, hour and a half with them on my podcast, which is called Heart to Heart with Saima. And उस podcast के ऊपर they would share their wisdom with me. And मैं आपको बता नहीं सकती कि ये जो लोग आए हैं एज गेस्ट ऑन माय शो, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, उन्होंने मेरे सोचने के तरीके को चेंज कर दिया। उन्होंने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि द कलर ऑफ द स्किन डज नॉट मैटर, बिकॉज अच्छाई बुराई हर शेप साइज रूप रिलीजन में आती है। एट द एंड व्हाट डज मैटर इज़ यू and your core and what your belief system is. And I will see you after the break. Listening to KZMJ, K2H1CS, Lucas, McKinney.
All right. Welcome back. It is Studio Miss Fact. It is 2:05 p.m. Thursday afternoon. You're listening to Heart with Saima. And I come to you every Thursday from 1 to 3. And my purpose and my mission is that whatever I do with passion. And I believe in touching lives wherever I go. With that, we have been talking about. Today's show is actually based off Dr. Wayne Dyer's, um, uh, talks and his talks on how we hold everything within us and how by changing the level of our consciousness we can, you know,
we can change how we engage इस दुनिया में हम किस तरह से जीते हैं किस तरह से हर चीज़ जो भी इस दुनिया की जो चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं जो अच्छाइयाँ हैं जो बुराइयाँ हैं आप किस तरह से अपने आप को हर चीज़ से डिटैच हर चीज़ से आप अपने आप को किस तरह से डिटैच कर सकते हैं और डिटैच आप हो जाएं हर चीज़ से ताकि जब आप अपने आप को आउटकम से डिटैच कर लेंगे तो फिर लाइफ द वे लाइफ ट्रीट्स यू द वे यू हैंडल एवरीथिंग एवरी good bad ugly that comes to you in life it will all change so हम जब इस दुनिया में आते हैं तो आपने किस तरह से जो बच्चे होते हैं दे आर सो क्लीन हार्टेड जो भी उनके दिल में आता है वो हर चीज़ को बोल देते हैं राइट दे डोंट होल्ड बैक वो बिंदास होते हैं दे आर जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड दे जस्ट से थिंग्स हाउ दे सी थिंग्स एंड उनकी वो इनोसेंस इज सो उनकी वो ऑनेस्टी इज जस्ट सो रिफ्रेशिंग बट जैसे जैसे हम बड़े होना शुरू हो जाते हैं वी स्टार्ट ग्रोइंग तो मोस्ट पीपल दे स्टार्ट उनके ऊपर प्रेशर्स आने शुरू हो जाते हैं कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन सिबलिंग्स की एक्सपेक्टेशंस फैमिली की एक्सपेक्टेशंस एंड देन यू नो कोई कहता है कुछ कोई कहता है कुछ और वो सब चीज़ें आप अंदर अपने एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं यू स्टार्ट टेकिंग इट ऑल इन एंड व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग इन यू आपकी जो एक ओरिजिनल जो एक पर्सनालिटी है वो that starts changing because that starts becoming a byproduct of everyone else's expectations और हमारे अंदर you know like दिन की 6,000 सोचें हमारे दिमाग से ट्रैवल करती हैं गुजरती हैं and we start becoming a byproduct of all these thoughts we become overthinkers uh, एंड ये सब चीज़ें जो हैं जितनी ज़्यादा हम सोचते हैं all of this is connected to then stress and वो stress हमारे अंदर it starts making way and जब ये सारी चीज़ें जमा होना शुरू हो जाती हैं तो you start becoming this person who's very far away from the person that we were as a child that we were meant to be एंड तो हम दूसरों की पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं बेटा तुम इंजीनियर बन जाओ या तुम लॉयर बन जाओ और फिर हम उनकी एक्सपेक्टेशंस उनके ख्वाब पूरे करने लगते हैं हम हमारे फ्रेंड्स कहते हैं नहीं यार ये ठीक नहीं है ये जो तुम सोच रखते हो ये तुम्हारी सोच जो है ये राइट सोच नहीं है तुम इस सोच को चेंज करके ना तुम वो सोच रखो जो मैं सोचता हूँ ताकि तुम मेरे जैसे बन सको सो व्हाट दीज आर ऑल ओपिनियंस ये खुद मेरे साथ अभी वीकेंड के ऊपर हुआ वेयर आई वाज विद फ्रेंड्स एंड दे हैड टेकन मी आउट फॉर माय बर्थडे एंड देन माय फ्रेंड्स हैड द एक्सपेक्टेशन कि आई शुड बिकम समवन जो उनकी थॉट्स के हिसाब से उनकी सोचों के दायरे के अंदर फिट हो सके एंड हियर्स व्हाट द थिंग इज आई रिफ्यूज टू डू दैट I mean, I'm not going to become someone based on someone else's expectations, someone else's thoughts anymore. Because I'm searching for myself. I'm searching for what gives me pleasure. I'm searching what makes me happy. तो जब हम इस सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं तो फिर ज़िंदगी में एक वो टाइम आता है जिसको हम मिड लाइफ क्राइसिस भी बोलते हैं जो कि I've also seen with my children and being in their teens कि teenagers in this country are going through that crisis, identity crisis in their teens because they do not want to become this person that their parents want them to become. They are their own individual being. And honestly speaking, teenagers are really close to my heart. Children are very close to my heart simply because I feel कि इस country में उनके ऊपर इतना बोझ है ऑफ एक्सपेक्टेशंस कल्चरल एक्सपेक्टेशंस रिलीजियस एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर इतना बोझ है इन सब चीज़ों का सो एक तरफ उनकी अपब्रिंगिंग का पेरेंट्स का कल्चर है दूसरी तरफ द एनवायरनमेंट दैट दे आर being raised in so there are two very drastic environments and
वो वक्त आता है where वो they are trying to break free from the bondage of parents' expectations so that they can be who they are meant to be. And this is not an easy journey. और इसमें हमें ये भी दिखता है कि unfortunately so much mental health issues come in because the kids are fighting to एक तरफ they're fighting to please the parents, दूसरी तरफ they are like okay but that's not what we resonate with, ये हमें उनको समझ में नहीं आ रहा है because so I get along really well with kids simply because uh, I understand where they are, and it's my own journey in life which has brought me to this point where I'm very close to my daughters now. And मैं किसी और को क्या बोलूं, but my kids themselves, एक continuous उनके साथ वो चीज़ चल रही होती है where they are always telling me कि mom ये चीज़ आप right कर रहे हो, mom ये चीज़ आप wrong कर रहे हो, mom this is not literally मैं क्या बड़ी बात करूं, but एक कोई छोटी सी एक कोई छोटी सी गलती भी हो जाती है, कुछ गलत चीज़ अगर मुंह से निकल जाती है तो वो उसी पॉइंट के ऊपर रुक के, वो उसी पॉइंट के ऊपर मुझे टोकते हैं, वो उसी पॉइंट के ऊपर मुझे रोकते हैं, वो उसी पॉइंट के ऊपर मुझे बोलते हैं कि मैम दिस इज़ रॉन्ग, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि किड्स आर आर मिरर्स। वो हमें हमारे इस दुनिया में आए हैं इसलिए नहीं कि वो हमसे सीख सकें और वो हमारी सोच का बाय प्रोडक्ट बन सकें या वो हमारे अधूरे ख्वाब पूरे कर सकें, बट हमारे बच्चे इस दुनिया में, आर किड्स कम इनटू दिस वर्ल्ड so that we can actually learn from them. Because अगर हम उनकी बात सुनेंगे, if we start listening to our children, they're actually going to help us become less judgmental. They're going to help us become more authentic. They're going to help us become more in tune with who we are meant to be. So when we start listening to our children, which I have been doing over the past probably couple of years, आई थिंक ये जर्नी जो मेरी है ये कोविड के अंदर शुरू हुई, जब हम घर के अंदर क्वारंटीन्ड हो गए एंड वी वर स्पेंडिंग सो मच टाइम विद ईच अदर। तो मेरा ये सफ़र विद माई किड्स इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द क्वारंटीन वेयर दे स्टार्टेड टीचिंग मी एंड दे स्टार्टेड, शुरू में बहुत ज़्यादा एंगर थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि यू डोंट लिसन टू अस, यू डोंट सी अस फॉर हु वी आर, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। हम जैसे ही आपसे बात करते हैं आप फौरन हमें लेक्चर देना शुरू कर देती हैं। सो जब बच्चे हमसे बात करने के लिए आते हैं ना, दे एक्चुअली डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ शोल्डर टू क्राई ऑन, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ काइंड ईयर, they are just looking for some kindness from their parents, they are looking for some support from their parents, they're just looking for someone who is willing to just tell them, hey, I understand what you're going through, hey, I love you, hey, thank you for being a part of my world, hey, you know what, you are enough just the way you are, and the most important, hey, I love you, I love you just the way you are, I accept you for who you are, regardless of the gender, regardless of the sexual orientation of your child. There's so many children, whether we're transgender, they're homosexuals, who are having a difficult time living their life because सोसाइटी में वो ऑस्ट्रासाइज होते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। But your kids have a right to be who they are. And it is very, very hard. It is the most hardest thing to accept your children for who they are, to unburden and to remove your expectations. वो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ, बर्डन उनके कंधों के ऊपर है, उसको रिमूव करना और उसके बाद उस गियर को शिफ्ट करना, where you tell your child, hey,
I accept you for who you are. Yes, it's hard on me and it's going to take me time, but I accept you for who you are. I love you unconditionally. और फिर आप अपने बच्चे को अगर ये एवरी डे ये मैसेज भेज देंगे ना, text if your child, if you have a bad relationship with your children, start texting them and just tell them, hey, I'm sorry for every time I've hurt you. Forgive me. I thank you for being a part of my world. I love you unconditionally, and you're enough, just the way you are. Do you realize, right? Each and every one of us is exactly who we are meant to be. We've been sent to this world by the Creator. We are who we are meant to be. Har insan, everyone is accountable for their own deeds. You are not accountable for your children's deeds. Your children are not accountable for your deeds. And everything stems from two things. The first one, the most important, the core, is love yourself. When you love yourself unconditionally, only then are you able to forgive yourself for your screw ups, for your mistakes. And again, I always say mistakes are just experiences, experiences that did not give you the outcome that you were hoping for. That's what mistakes are. But everything that comes in our life, forgive yourself for whatever it is. Go and stand in front of the mirror and look at yourself. Look at yourself in the mirror and tell yourself, I love you. I love you, Saima. I love you. You're amazing. Tell yourself each and every inch of you, each and every inch of your body, how grateful you are for each and every, your fingers, your toes, your liver, your heart, everything. Tell yourself how grateful you are for your heart to be pumping blood so that, it gives you a life to live, for your brain to be functioning so that it can bring balance in your life. Each and every part of you, it doesn't matter आप पतले हैं, मोटे हैं, दुबले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं. Stop being so critical to yourself, because when you're critical to you, then you're critical to your children. It means your parents were very critical to you. अगर आप बैठ के ये सोचते हैं कि ओ my parents beat the crap out of me, and look at me, I've turned out really well. You know what? Let's not sit there and think who is well, who isn't well. Let's just work on self reflection. Let's just work on becoming a better version of ourselves. Make sure that just because your parents beat you up, that you don't beat your children up. Because you think by beating your child up, by being abusive, you're being a better parent. How about instead of being abusive, how about communication? Why not try communication? Why not sit there and listen to what your child has to say to you? If your child is sitting there and telling you as a parent that you're a jerk, maybe self reflect. The child who lives in your house feels that you're a jerk, then maybe you need therapy. Maybe you need counseling. Maybe you need to work on yourself. Maybe you need to work on your anger. Maybe you need to work on your patience. And so many of these things, this is my own journey. This is my own journey of growth. This is my own journey of constantly evolving. This is my own journey of constantly growing.
तो मैं अपने ऊपर वर्क करती हूँ, अपनी हर चीज़ के ऊपर। और ये मेरा जो सफ़र है 2016 से शुरू हुआ था, when my family took a business hit, and it was a huge hit and we lost so much. और उस पॉइंट के ऊपर I extracted myself from everyone else in my family, and I started working on my own journey, on my own journey of healing, on my own journey of growth. And that's what it is about. And that's what Heart to Heart is about, is just sharing. If I use the word God and you want to think, you know, अल्लाह और भगवान और वाहे गुरु, जो भी आप सोचना चाहें, आप उन वर्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं आपके ब्रेन में। अगर आपको मेरी कोई बात से आप रेजोनेट नहीं करते, अगर आपको लगता है, क्योंकि मेरी अक्सर इस बात के ऊपर लोगों से डिबेट होती है कि इट इज़ रॉन्ग फॉर यू टू बी फिजिकली अब्यूसिव टू योर चाइल्ड, और मेरी डिबेट होती है लोगों के साथ, बिकॉज वो बोलते हैं कि नो, हमें भी वी वर बीटन अप and we have turned out amazing. There's nothing wrong with us. So it's okay for kids to be beaten up. And that is not true. How would you feel if someone just comes up to you right now and slaps you? Would that be okay? I don't think you'll be able to tolerate it if someone comes and slaps you. What about your child? If someone comes and slaps your child or your grandchild, if your child hits your grandchild, you won't be able to tolerate that. So what makes you think abuse is right? Instead of being an abusive parent, why not work on your communication? Why not listen to what your child is trying to tell you and become a better human being and become a better parent? Which is literally what I have been doing in my life. I've been learning from my children. They've been telling me on a daily basis what wrong I do, what mistakes I make. और मैं आपको ये बताऊं कि the more I self-reflect, the more I work on myself, the more work there is that remains to be done. यहाँ पर आके मैं आपसे ये सारी बातें करती हूँ, राइट, और मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ, और मैं ये बात करती हूँ कि किस तरह how to be a better person, how to self-reflect, because ये मेरी journey है. This is something I'm constantly working on. But जो सबसे बड़े मेरे critics हैं ना, those are my children. अभी थोड़ी सी कोई चीज़ हो जाती है, कोई चीज़ रख के मैं बोलती हूँ, क्यों मेरी चीज़ यहाँ से, चाबी मैंने रखी थी काउंटर के ऊपर और वो चाबी गायब है मेरी काउंटर से. So where has my key gone? And I'm like, okay, kids, it must be you. I'm in a rush. I have to leave. And you guys must have taken the keys somewhere. And they're like, oh, okay, here's this person, जो सबको ये बता रही है कि how to be a better person, and here this person is going all ballistic and all crazy, right, because she can't find her keys and she's blaming us कि आपने कहीं रखी होगी, and then I will find it maybe in my bathroom or in my different purse I might have used, or in a jacket, or somewhere, गाड़ी में छोड़ दी. So I'm just trying to tell you कि I'm this most imperfect person, but all I'm trying to do is share my journey with you, my journey of growth, my journey of how I'm working on becoming a better version of myself. And, that's what Heart to Heart is. This is Saima Dillon. I believe in touching lives. And, whether I start my show with a real estate segment from 105 to 130, and then 135 onwards, I transition into Heart to Heart. And no matter what I do, I'm passionate about everything that I do, and it's from the heart. And, that's my journey that I come here and I share with everyone. And
It's far from being a perfect person, but that's what the journey is. Uh, with that, we are going to go into our next song. So here we go. All right. So I hope you enjoyed that. I do try के बीच में थोड़ा बहुत music आप लोगों के लिए play कर सकूं. So we have uh,
In association with North Texas IAFT presents the 45th Anand Bazaar, celebrating 75 years of India's independence. On Saturday, August 20th, at the Frisco Cup Riders Day, one of the popular musical concerts by the rock star himself, who has enthralled audiences with hits like Get ready for the festivities with food, culture, and lots of music only at the 45th Anand Bazaar. For rooms, sponsorship, and information, visit iant.org. That's iant.org. Once again, the 45th Anand Bazaar on Saturday, August 20th at the Frisco Riders Stadium. See you there. Check in. Hello, hello, hello. Welcome to Heart with Saima. How is everyone doing today? We come to you every Thursday from 1 to 1:25. All right, so welcome back. You're tuned into Radio Caravan 104.1 FM, 700 AM. You can listen to us by going on to jointhecaravan.com. This is Heart to Heart with Saima. And if you are trying to call us, if you call during the break, it's easier for me to answer because I do live stream. I do live stream my show, and so we are live streaming um, on Facebook, on YouTube, on LinkedIn. आपको shows YouTube के ऊपर भी मिल जाएंगे if you go on to Heart with Saima under Saima Dillon. तो काफ़ी कुछ हो रहा होता है simultaneously, music selection and whatnot. So multitasking is at its peak between the different devices and the different gadgets. Um, anyways, थोड़ा सा कभी मुश्किल हो जाता है to do that. तो उसके अलावा we have been talking about, I've been, talking about what I've been reading by Dr. Wayne Dyer. And Dr. Wayne Dyer की जो messages हैं वो YouTube के ऊपर हैं. And
he basically says कि हम जिंदगी में while we are alive we take in so much चीज़ों का बोझ हमारे ऊपर. We conform to so many different identities, we conform to so many different expectations दूसरों की. और जब ये ज़िंदगी इतनी छोटी है और जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमारी जो रूह है उसको हर चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा. And our soul can be once again can go back, revert to being themselves which we are when we come into this world. तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सोचें, हम इस दुनिया में while we are alive we can take the keys and we can unlock the self imposed prison जिसके अंदर हम अपनी जो सोचों का जो प्रिजन है, जो एक्सपेक्टेशंस का जो प्रिजन है, हम उसके अंदर से अपने आप को निकाल के आज़ाद कर सकते हैं. And we have come to believe that our limitation, what we can and cannot do, we let go of that. We rewrite our own story with the reality based on who we really are. We write a new contract for ourselves and we free ourselves. So we can become an authentic person, we can become who we are truly meant to be. और ये जो सफ़र है ज़िंदगी का, मैं पर्सनली खुद इस सफ़र के ऊपर हूँ where I'm working on disposing so much of the baggage जो मैं अपने कंधों पे लेके चल रही थी. And gradually, slowly, I'm building myself, giving myself strength, giving myself courage. Courage to be who I'm meant to be. Courage to be strong. Courage to withstand what other people tell me I should and shouldn't do. And become my own authentic version of myself. And be someone who my daughters can be proud of. And in order to be this person, this parent, whose kids are proud of them, you first have to listen to what will make your what gives your kids a high, what makes them jive, what makes them happy. So that is extremely important. जब आप अपने आप के अंदर डाउट रखते हैं, when you doubt yourself, when you doubt your abilities, you prevent yourself from reaching this higher level, because what you think about, जो भी आप सोचते हैं वो चीज़ एक्सपैंड करती है. अगर आप अपने ऊपर डाउट करेंगे, अगर आपको खुद पे यकीन नहीं होगा, तो फिर वही चीज़ जो है वो एक्सपैंड करेगी. जो चीज़ें हमें हैंड ओवर की हैं इन अ प्लेटर, जो चीज़ें हमारे ऊपर ला दी गई हैं, आप किस तरह से उसके अंदर से अपने आप को निकाल के एंड यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ. यू रियलाइज कि कोई भी इस दुनिया में जब आता है तो उसको ऑटोमेटिकली नहीं पता कि आप स्विमिंग कैसे करेंगे, राइट? कोई ना कोई आपको सिखाता है, आप किसी ना किसी से सीखते हैं, किसी को वॉच करते हैं. तो यू वॉच अदर पीपल डू इट, और जैसे आप दूसरों को देखते हैं आपके अंदर से वो डाउट जानी शुरू हो जाती है, जिधर आप फील करते हो गॉड मैं तो नहीं कर सकता. बट जब आप दूसरों को देखते हैं तो आपको खुद पे भी आप सोचते हैं कि व्हाट, आई थिंक आई कैन डू इट टू. इसी तरह बाइसिकल, आप सोचते हैं कि मुझे बाइसिकल नहीं आती, मैं नहीं चला सकूंगा, और मे बी अ सर्टेन डांस स्टेप्स, राइट? Yeah, you want to bake a certain kind of a cake and you're like, no, I can't do it because I have never done it before. But किसी को आप देखते हैं और आपकी जब अवेयरनेस आती है तो आपको खुद पे यकीन आना शुरू हो जाता है कि ओके व्हाट, मैं खुद इस चीज़ को कर सकता हूँ. So Wayne Dyer also continues to say, उसने कि everything is within us. And he shares this really, really cool poem by this author
who's in California. Her name is Valerie Cox, and she lives in Seattle. And उसकी ये जो poetry है, it's the difference between what you know and what you believe. So what you know and what you believe are two different things. So उसकी ये जो poetry है, the poetry goes, a woman was waiting at an airport one night with several long hours before her flight. She hunted for a book in the airport shop, bought a bag of cookies, and found a place to drop. She was engrossed in her book, but happened to see that the man beside her, as bold as could be, grabbed a cookie or two from the bag between them, which she tried to ignore to avoid a scene. She munched cookies and watched the clock as this gutsy cookie thief diminished her stock. She was getting more irritated as the minutes ticked by, thinking, if I wasn't so nice, I would blacken his eye. With each cookie she took, he took one too. And when only one was left, she wondered what he would do. With a smile on his face and a nervous laugh, he took the last cookie and broke it in half. He offered her half as he ate the other. She snatched it from him and thought, oh, brother, this guy has some nerve. And he's also rude. Why, he didn't even show any gratitude. And she has never known when she had been so galled and sighed with relief when her flight was called. She gathered her belongings and headed to the gate, refusing to look back at the thieving ingrate. She boarded the plane and sank in her seat, then sought her book, which was almost complete. As she reached in her baggage, she gasped with surprise. There was her bag of cookies in front of her eyes. I love that. I love that. If mine are here, she moaned with despair. Then the others were his, and he tried to share. Too late to apologize, she realized with grief that she was the rude one, the ingrate, the thief, the cookie thief. And all of us, in some way, are cookie thieves. Because हम समझते हैं कि we are know it all, we believe कि we are the enlightened ones, we believe कि हमें सब कुछ पता है, हमारी awareness का level इतना high है कि हम कुछ गलत नहीं कर सकते. But हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते. We don't look at ourselves. We don't look at our own mistakes. We don't look at our own imperfections. And we are constantly out there judging others, what others have wrong, how others have wronged us, how others have done wrong things, instead of showing gratitude, instead of showing gratitude to others. So there's a fine line belief between that system, right? But हमारे बच्चे हमारी लाइफ में इसीलिए आते हैं कि वो हमारे पाँव ज़मीन पे स्टडी कर सकें, हमें आईना दिखा सकें, हमें कॉन्स्टेंटली दिखा सकें जब हम हमारी गलतियां हमारे फेस के अंदर रख के जब हम गलतियां करते हैं. So start listening to your children so you can build a better relationship with your child. There is so much. I always believe कि खुदा ने हमें मुकम्मल बनाया है. Everything जो हम बाहर दर बदर ढूंढते हैं, वो हर चीज, it lies within us. It is all within us. We will find it all within us. We have within us the power to heal. अगर हम अपने आप को बोलें, most of the illnesses वो सब हमारे अंदर मौजूद है, right? All the illnesses. But stress triggers different illnesses within us. And वेन डायर ने ये एग्जाम्पल दी कि उसकी बेटी को शी हैड व्हाट इज कॉल्ड फ्लैट वार्ट्स, और वो अपनी बेटी को एक डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हवाई में लेके गया.
And Hawaii के अंदर, this dermatologist believed, he had this saying um, कि हर चीज that we know inside, it will triumph. And अगर आप ये believe करोगे, if you believe in yourself, you can heal anything that takes place. तो उसके पास जब लेके गया तो उसने उसकी बेटी को, ये फ्लैट वर्ड्स की अपेरेंटली कोई हीलिंग नहीं है, ये सिर्फ वक्त के साथ ये चीज़ जाती है, और ये उसके चेहरे के ऊपर ये निकले हुए थे। तो उसने उसकी बेटी को बोला कि शायद जब तुम्हारी शादी हो तो ये जा चुके होंगे, और उसकी बेटी उस वक्त 7.5 साल की थी सिर्फ। उसने उसको बोला जाने से पहले कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है, अगर तुम अपनी इस चीज से, इस बीमारी से बोलना शुरू कर दोगी कि तुम चली जाओ, तो ये चली जाएगी। तो वेन डायर ने बोला कि उसने अपनी बेटी को एक दिन देखा कि वो 7.5 साल की बच्ची अपने आप को एक टॉर्च जला के चादर के अंदर बैठी हुई थी, और उसने पूछा कि ये क्या कर रही है चादर के अंदर, और ये किससे बातें कर रही है। तो उसकी बेटी ने बोला कि मैं अपनी ये फ्लैट वर्ड्स से बात कर रही हूँ, फ्लैट वर्ड से बात कर रही हूँ, और मैं उनको बोल रही हूँ कि वो प्लीज चले जाएं। एंड मैं उनसे रोज बात कर रही हूँ, सुबह दोपहर शाम, कि वो चले जाएं और वो निकल जाएं मेरे अंदर से। और वेन डायर ने बोला कि यू विल नॉट बिलीव दिस, but in 3 days, he said, as God is my witness, every single bump from her face was gone, and none of it came back. So there is this stream of healing, this power which lies within us, something that we can plug into very much like electricity. कि आपने plug in कर दिया, it is there for us to tap into, so we can heal ourselves. Every one of us human beings out there can tap into ourselves and can heal us. हर इंसान के अंदर दो चीजें के दो रूप हैं, एक उसका ईगो, which is like हमारे अंदर, and which is separate from this other person within us who believes in the mystical awareness of life. और आपका ईगो जो आपका है, वो हर चीज में आपका ईगो आपको बोलता है कि दिस इज माइन, मैं राइट हूं, मेरी हर चीज सही है, जो मेरा सोचने का तरीका है वही तरीका राइट है। And then there's this other person which is like the sacred self or the higher self within us, who doesn't care about the ego, who doesn't care कि कोई क्या कह रहा है, who doesn't care कि कौन हमसे बेहतर है, who doesn't care कि कोई दूसरा क्या गाड़ी चला रहा है, कि उसका घर कैसा है, वो क्या पहन रहा है, वो क्या ओढ़ रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ता वो sacred person को within us. And all that sacred self wants is to be at peace with ourselves. Whatever choice, whatever we make, whatever interaction we have, when we are at peace with our higher self, ego बोलता है नहीं 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 नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों को ढूंढो, उन रिश्तों को जो अपने जैसे हैं, जो इस तरह हैं, जो उस तरह हैं। मगर जो पीस ऑफ माइंड है और जो पीसफुल, जो सेक्रेड हायर सेल्फ है, all that wants is to find something which brings peace. It is most important in life to be kind rather than to be right. When you have choices, and you have choices in your relationship, आपके स्पाउस के साथ, आपके एक्स हस्बैंड के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, आपके इन लॉज के साथ, आपके बच्चों के साथ,
वो अजनबी लोग जो हाईवे के ऊपर, फ्रीवे के ऊपर आपके साथ चला रहे हैं, प्लेन के ऊपर जो फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं, होटल के जो वेटर्स हैं, अगर आप उन सब लोगों के साथ इंटरैक्ट करें, just to be kind instead of listening to your ego which says, oh, मैं कुछ हूं, मैं ये कार चलाता हूं, या मेरा घर ये है, या मेरा काम ये है। जब आप इतने ज्यादा ईगो में रहते हैं, तो आपका ईगो जो है आपको स्ट्रेस और आपको एंजाइटी और आपको खौफ से भर देता है, बजाय इसके कि आप उस ईगो की बात सुने। यू नो व्हाट, listen to your higher self who wants to have peace of mind. अगर आपको मैं एक जादू की छड़ी दूं और आपको कहूं वो एक चीज आपको कुछ भी जिंदगी में मिल सकती है, मांग लो जो आपको मांगना है, तो आप क्या मांगेंगे? कुछ भी आपको अगर मिल सके उस छड़ी के साथ, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, मनी, anything that you want, what will you ask for? But here's a thought, कि अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, बेतहाशा पैसा, none of these things will bring you peace of mind. तो अगर आपको कभी वो जादू की छड़ी मिले और आपको वो चांस मिले to find peace for the rest of your life, so you can be at peace with whatever comes along in your life, and you choose peace, वो चाहे हम इस दुनिया में छोटे से वक्त के लिए हैं, वो कितना छोटा है we don't know, but the ability to be able to choose peace with that sacred part that is within you, जो हमेशा तलाश कर रहा है for you to connect to that higher person within you. जब आप उस इंसान के साथ, जब आप अपने उस, when you start connected to your inner self with that person, so your life will change forever, because that peace of mind right there, it's priceless. ना उसकी कोई कीमत है, ना उसका कोई मोल है। To be, to find your peace, to be at peace with yourself, to be at peace with who you are, the ability to live your life on your terms and do. Peace of mind doesn't have anything to do with not going out there, not, you can still be, you can be, have your passion, you can have your wishes in life, you can still go after things, you can still make money, you can still treat life as a challenge, but that peace of mind is priceless. And वो जो peace of mind का कोई मोल नहीं है, that peace of mind, it shows on you, it reflects on you, it shows on your face, it shows in your demeanor. So मेरा ये जो सफ़र है ज़िंदगी का, जो सफ़र चल रहा है, उस सफ़र में, you know, I'm it's this journey of mine where I've tapped into that higher being and that peace of mind. Or unfortunately, I do have to try and stay away from anyone who disrupts that peace of mind, because फिर मेरी अंदर से एनर्जी खराब हो जाती है। वो जो हैप्पी फीलिंग मेरी होती है, and these could very well be people that I love a lot, but if they are tapping into, and if they mess up my energy, and if they fill me with their doubt, and if they try to shift their doubt on me, then
I have to steer clear of them, and I have to stay away from them, because that makes a difference to my energy, my demeanor. और ये सफ़र तो अभी शुरू हुआ है, you know, 2016 में शुरू हुआ था, और ये सफ़र अभी चल रहा है, और ये सफ़र कब तक चलता है, जब तक जिंदा हैं जब तक चलता रहेगा. तो um, you know but I it's so difficult to explain the joy you feel within you when your kids are proud of you, when your kids are proud and they stand there and they say, "Mom, you are a kick-ass woman," and or they stand there and they say, "Mom, we are proud of you." To become that person when your children are proud of you, I'm telling you, um, जिंदगी की ऊंच नीच, हार जीत, सक्सेस फेलियर, लॉसेस, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, और सब कुछ चलता रहेगा. As long as we are alive, all this will continue. But to become someone that your kids can be proud of, that right there is sublime. That, my friends, right there, it's priceless. And ये एक जर्नी है. इस जर्नी के अंदर आपको रोज मेहनत करनी पड़ती है. जब मेरी एनर्जी अंदर से शिफ्ट होती है, और आई माइट बी विद सम पीपल जो वो अपनी खुद की डाउट आपके अंदर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, एंड मैं अपने अंदर इम्बैलेंस फील कर रही होती हूँ, तो आई जस्ट गो, you know out there. I just go and listen to some affirmations from Louis Ray, or इस वक्त के Wayne Dyer. There are other such people, आप जिसमें भी आपका belief हो, whoever you want to listen to. um, I'm no expert. This is exactly where I started my show, by telling you कि मैं कोई expert नहीं हूँ. um, मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का सफ़र शेयर करती हूँ आके. एंड मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी होप है, इतनी उम्मीद है कि जैसे मैं अपने सफ़र में चल रही हूँ, तो जैसे जैसे मैं कदम एक एक कदम आगे बढ़ाऊँ, वैसे वैसे अगर कोई और मेरे साथ इस सफ़र के अंदर ज्वाइन करना चाहे, and you want to touch other people's lives, because ये बहुत powerful है, right? एक से दो, दो से चार, चार से आठ, right? It's just um, it's magical. But what you feel inside, it's truly magical. It's so elevated. You just feel that you can fly. And that's literally how I feel I can fly. This is Saima Dillon signing off. See you next week. Let's touch lives together. Asim, thank you so much. Thank you for your kind words. Yes, that poetry is by, it's by, if I can find it again, I did give her name before, so you'll find it. Um, Anyways, I'll share it later with you. But yeah, yeah, it's there. I have so much information on my screen. So, anyways, take care, everyone. Thank you all for being here, and thank you for being a part of my journey. Um, Heart to heart with Saima. Take care, and we'll see you next week. Facebook लाइव जो मैं कर रही थी, वो फेसबुक ने मुझे बैन कर दिया, बिकॉज वो एक गाने की आवाज़ थोड़ी सी तेज़ हो गई थी. Anyways, so this is working through StreamYard. Obviously, you guys can hear. दूसरा वाला मुझे बंद करना पड़ा. So, anyways, take care. See you next time.